Hello student, how are you all? I hope you are well and good at your home. Okay, so last we are done with the chapter number 10, directions and stress, right? Okay, so today we are going to do chapter number 11, Venn diagram. Okay, see this chapter is already have come in the previous standard also. Then also I am giving you small introduction that what is the Venn diagram. Okay, so the Venn diagram is used to represent relation, to make the relation between the different items or different objects. Then सी दैट मीन्स कि कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मीन्स सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उसके बीच में कोई रिलेशन है तो वो दिखाने के लिए वेन डायग्राम का यूज होता है. जनरली वी यूज द सर्कल और ओवल्स फॉर दैट. बट हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं टू शो दैट रिलेशन. ओके सो chapter number 11, Venn diagram, that is in page number 33. Chapter number 11, page number 33. Okay, so the question is given like, study the given Venn diagram and answer the following question. That okay, so in this one we have to the Venn diagram is already given. Venn diagram हमें already दे दिया है. So उसके related हमें questions जो नीचे दिए हैं उसके answers देने हैं. Okay, let me draw the first Venn diagram. This is question number A. Venn diagram is given like that. Okay, then after one triangle and a circle. Okay, so this is how the Venn diagram is given, and in this one the numerical letters are given. G, E and F. Okay, so this is the Venn diagram. On the side there are given for that one said the triangle is represent ruler, the square is represent hard working, the circle is represent unemployed, okay, so that means this तो ये तीन रिलेशन इसमें दी हुई है. Okay, so as per that there are the questions are also given. So first question, people who are ruler. Okay, so rulers, so rulers के लिए क्या है ट्राइंगल. so ये ट्राइंगल्स वाले सारे. तो ट्राइंगल्स के अंदर जितने इंक्लूड होते हैं वो. नेक्स्ट हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग है, राइट. ओके, अभी हार्ड वर्किंग के लिए कौन से हैं दिस वन, दैट मीन्स ट्राइंगल एंड स्क्वायर. तो उसके रिलेटेड ये दो आते हैं बी एंड सी. देन ओके, अभी और भी दिया है बट एम्प्लॉयड, दैट मीन्स कि वो काम भी करते हैं. देन but the C1 is for the unemployed. जो C1 circle दिया है then is for the unemployed. That means ये C आ नहीं सकता. That means answer is the B. Right? So the first answer is B option, B1. Okay. Second one, people who are hard working. Okay, so the hard work is the square. Unemployed is for this circle. Then
सो हार्ड वर्किंग आर दिस, अनएम्प्लॉयड आर दिस। तो उसके बीच में कौन से आते हैं? सी एंड ई, ये दो आते हैं, बट नॉट रूलर्स, पर रूलर नहीं है, दैट मीन्स ये सर्कल मीन्स ट्राइंगल के अंदर नहीं आने चाहिए। सो दिस इज ई ओनली। सो सेकेंड वन का आंसर क्या आएगा? D1 E. Okay. Next, third one, by which letter unemployed, ruler and hard working people is represented? So which letter? Unemployed, first one is for the unemployed, so that is for the circle. Hard working, that means square, तो हाँ इन दोनों के बीच में आता है कोरिलेट C and E. And ruler is for the triangle, so that means ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। वैसा वाला हमारे पास एक ही लेटर है which is C1. Then and third one answer is C1 C. Then next fourth one, by which letter the ruler peoples who are neither hardworking nor unemployed is represented? मीन्स कौन से लेटर से रूरल पीपल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि ना ही हार्ड वर्किंग है और अनएम्प्लॉयड भी नहीं है? दैट मीन्स रूरल पीपल इज फॉर द ट्राइंगल, देन उसमें ये चार आते हैं, उसमें से हार्ड वर्किंग वाले निकाल देंगे और अनएम्प्लॉयड वाले निकाल देंगे, राइट? नॉर अनएम्प्लॉयड, सो लेटर ए इज रिमेन फॉर दैट वन. सो फॉर द फोर्थ वन, option A. Then fifth one, by which letter the ruler unemployed peoples who are not hard working is represented? Ruler, triangle, ruler, unemployed, that means circle, that means ये दोनों आएंगे. वो आर नॉट हार्ड वर्किंग, दैट मीन्स वो हार्ड वर्किंग नहीं है, दैट मीन्स ये सी नहीं आएगा बिकॉज सी वाला हार्ड वर्किंग भी है, दैट मीन्स आंसर इज डी. सो द ऑप्शन फॉर द फिफ्थ वन, ऑप्शन डी, आंसर डी. सिक्स्थ वन, पीपल हु आर नाइदर रूलर, मीन्स कि वो रूलर नहीं है, नॉर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग भी नहीं है, मीन्स रूलर नहीं है और हार्ड वर्किंग भी नहीं है, तो उसके बाद बचा क्या? सिर्फ ये जी. देन बट अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड में है तो जी आएगा. डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वन फॉर दिस वन. पीपल हु आर नाइदर रूलर, मीन्स रूलर भी नहीं है, nor unemployed, अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, दैट मीन्स ट्राइंगल पूरा चला जाएगा इसमें से और सर्कल चला जाएगा, बट आर हार्ड वर्किंग, मीन्स ये हार्ड वर्किंग वाला सिर्फ एफ बचा, दैट मीन्स एफ इज द आंसर. सेवंथ वन, ऑप्शन ए, एफ. देन okay, so that's how we can do the Venn diagram. Okay, this is the A question. There is one more question is there, which is question number B. This is same as that one only. Study the given Venn diagram and answer the following question. Then ये इसी तरह से दिया है. Okay, let's see this one, this question also. Okay, question number B. Triangle, after the circle is given and square is given. Okay, so that's how the question is given. Okay, in that one numbers are given just like this. A is 1 2 3
4 5 6 and 7. Okay, on this side there is given for the triangles are doctors, squares are politicians, and circles are ministers. Okay. Okay, now so question number 1, first question: politicians who are ministers but not doctors are represented by, that means politicians हमें लेने हैं, politician कौन सा दिया है, square, that means ये 4 में से एक आएंगे. politicians who are ministers means वो ministers है, that means ये circle आएंगे. but not doctor, that means triangle नहीं है, that means B नहीं है. so our answer is for that one is A, first one A option 2. Okay, second one: ministers who are neither politician nor doctors. Minister circle, neither politician nor doctor, so this one last is remaining, just C1 3. Third one: doctors who are politician but not ministers, that means circle में नहीं आएगा, that means this one is remain and the option is D1 7, right? Okay, next fourth one: politicians who are doctor as well as ministers are represented, that means politician है, doctor भी है और minister भी है. B1 only, directly B1. Okay, next fifth one: which number represent the doctor triangle who are neither politician and nor ministers, means remaining one is 6 and the option is C. Next sixth one: which number represent the politicians who are neither doctor nor minister. Politicians first, this one means जो डॉक्टर भी नहीं है और मिनिस्टर भी नहीं है, it is remaining with the A, means 1. Last one: which number represent the ministers whose are doctor but are not politicians. Minister represented by the circle, but who are doctor, इसकी जो डॉक्टर है but ministers sorry, who are doctors but not politician, but politicians नहीं है. Okay, so that is represented by this one 4, option number D. Done? Okay, so that's it for today. Question number A and B I have done. Question number C I am giving you for the homework. I am reading the question, I am explaining it. In the given Venn diagram, circle represented prayers, rectangle represented girls, triangle represented students. The letter which represented girl students who are prayer is. So इसमें दिया है कि सर्कल जो है वो प्रेयर्स रिप्रेजेंटेड करता है, रेक्टेंगल जो है गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है और ट्रायंगल जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है. डन. तो आपको वो लेटर एक फाइंड करना है इसमें से कि वो वाली गर्ल स्टूडेंट जो प्रेयर करती है. डन.
Okay, this is easiest question, okay, that I am giving you for the homework. Okay, so that's it for today. Bye. We'll see next week. Okay.